Hello students, welcome back. Let's move on towards the practice book portion for class 6th. Okay, it is the volume first practice book. Before that we will move on to our content book also. Why? Because some things are there in the course book or our content book also. Let's move further. The first topic is word power. Word power, and the topic under this word power is synonyms and antonyms. Synonyms means पर्यायवाची, एंटोनिम्स मीन्स विलोम शब्द. तो पर्यायवाची और विलोम शब्द के बारे में आज हम जानेंगे. सिनोनिम्स, डिफरेंट वर्ड्स दैट मीन द सेम आर नोन एज द सिनोनिम्स. जो डिफरेंट वर्ड्स एक ही मीनिंग कैरी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिनोनिम्स. फॉर एग्जाम्पल, डेलिकेट इज ऑल्सो इक्वल टू फ्रेजाइल, फास्ट इज इक्वल टू क्विक, almost is equal to nearly, lovely sometimes it is equal to lovely and beautiful are same, then ancient and old are same. Okay, new and latest are same. Okay, so there are some words which have the same meanings. Those words are known as the synonyms. Okay, so here is the example. Jamal said that he wanted to see the Ram Leela. He said that he had always heard his father say wonderful things about the performances. So he said that he too wanted to see the play. He said that he would take his younger brother and sister too. He said that he was sure that he would be interested to see the play. Did you notice the number of the time word said was used? We can see that around 6 to 7 times we can see in this para the word sad is used. But there are several other words which can be replaced for sad. जिन वर्ड्स को हम और रिप्लेस कर सकते हैं सैड की जगह पे, रिपीटेशन के को हटाकर, और हम हमारे पैराग्राफ को, हमारे सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जब हम एक ही वर्ड के बदले उसके और कुछ मीनिंग्स भी यूज़ करते हैं तो वर्ड क्या कहलाता है? वो वर्ड कहलाते हैं सिनोनिम्स. सैड के बदले हम लिख सकते थे डिस्क्राइब, announced, declared, remarked, stated. Okay, these words can also be used in place of said. Okay, so now this one is homework for you. This fill in the blanks, let's try for you have to do of your own. Okay, next move further. Antonyms. Antonyms are the opposites. समानार्थी शब्द सिनोनिम्स, विलोम शब्द एंटोनिम्स. जब किसी वर्ड का मीनिंग दिए हुए वर्ड से क्वाइट ऑपोजिट होता है तो वर्ड क्या कहलाता है? एंटोनिम. जैसे डेलिकेट, स्ट्रॉन्ग, टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन. एंशियंट, मॉडर्न, अटैक, डिफेंड, ब्रेव, कोवार्ड, कलेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट, एंग्री, काम, डिटैच, अटैच, डैम्प एंड ड्राई. Okay, so let's move towards the exercise. Let's try 5. We have to give here the meaning for the word, for these words written here, for the phrases written here we have to give a meaning. और उसके बाद हमें क्या करना है? उसका एंटोनिम भी फाइंड करना है. टू शॉर्टन अ टेक्स्ट और अ स्पीच, कंडेंस. कंडेंस का ऑपोजिट क्या हुआ या एंटोनिम क्या हुआ? एक्सपैंड. टू गैदर, कलेक्ट. कलेक्ट का ऑपोजिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट. टू लूज हार्ट और लूज फेथ, डिसअपियर. डिसअपियर का ऑपोजिट क्या होगा? होप. टू बी ऑलवेज अफ्रेड. अफ्रेड जो हमेशा घबराता रहता है. टिमिड. कायर. कायर का ऑपोजिट क्या हुआ? बोल्ड. टू गो अप, एसेंट. एसेंट का ऑपोजिट डिसेंट. समथिंग वेरी ओल्ड, एंशियंट. एंशियंट का ऑपोजिट मॉडर्न. टू विन अ बैटल, कॉन्कर. कॉन्कर का उल्टा क्या हुआ? जीतने का उल्टा क्या हुआ? हारना, डिफीट. ओके, शॉर्ट, कंडेंस. कंडेंस का ऑपोजिट एक्सपेंड. टू बी स्लाइटली वेट, डैम्प. डैम्प का ऑपोजिट ड्राई. टू रिमूव, detach. Detach का opposite attach. Now again here is a list of the words. Here the words are given as synonyms, and again the prefixes are used and words are made as the antonyms, opposites. Okay, so now this one, let's try 6 is homework. You have to find out the opposite of these words. That's all. No, sorry, let's move on towards the practice book. Practice book, we will see some questions, some more questions. It is the practice book for class 5th. You have to move on to the page. Again synonyms. Okay, vacant, empty, discipline, control, violent, brutal or harsh, fit, healthy or apt, direct, straight, profit, gain or benefit, happy, glad, joyful, joy, happy, glad, clever, smart or intelligent, just, fair, exactly. Next is the part for the antonyms. Okay, so like, unlike, just, unjust, patient, impatient, fit, unfit, honest, dishonest, possible, impossible, literate, illiterate, regular, irregular, violent, non-violent, direct, indirect. Okay, that's all in this video. See you soon.